students. So now we will discuss about sexist language. Sexist language, this is a very technical term. The language which is used to demean women, to belittle girls is known as sexist language. Sexist language can also be known as sexually colored language. That means we use a particular kind of language by which we intend to belittle women, by which we aim to belittle women, by which we want to crush their own self confidence. जदि गोटे आम एमतिया भाषा व्यवहार करुचु जो भाषा रे आम स्त्री लोक मानकु बा झियो मानकु अपमानित करिया पई चाहूचु, आम जो भाषा व्यवहार करुचु से भाषा रे आम से मानकु बिलिटिल करिया पई चाहूचु, छोट देखैया पई चाहूचु, ताहले आम सेटा को कहबा सेक्सिस्ट लैंग्वेज. सो दिस सेक्सिस्ट लैंग्वेज इज आल्सो इन रैम्पेंट यूज. आम बहुत भाव देखुचु जे सेक्सुअल कनोटेशन थिबा लैंग्वेज आम बहुत भाव व्यवहार होतबा देखुचु. सो सेक्सिज्म इन लैंग्वेज मैनिफेस्ट इटसेल्फ व्हेन लैंग्वेज डिवैल्यूज मेंबर ऑफ ए सर्टेन ग्रुप. सो सेक्सिज्म टा आसुची गोटे भाषा रे सेक्सिज्म टा आसुची जेतेबेले कंटिन्यूअसली बा रेगुलरली आम देखुचे जे गोटे डिवैल्यू करा होची, गोटे ग्रुप गोटे सोशल ग्रुप को डिवैल्यू करा जाउची, सेही समाज रे सेही गोष्ठी रे सेही लोक माने ही सेक्सिस्ट लैंग्वेज व्यवहार करती. द ग्रुप or the person or that community, that social group which intends to belittle women. जी sexism को आने पर चाहूँगी language रे सी निश्चित भाव रे someone who do not respect women, someone who do not respect girls, जी other sex को सम्मान दबा को चाहू नहीं, जी other sex को असम्मानित करिया पर चाहूँगी सी sexism को आनुची language भीतर को. So language रे केमिति sexism आसीबो तम माने भाबुतबो समस्ते हुई तो एक कथा मन रे आस्ताई पारे how the language can be sexist. So I will explain and I will also give you some examples. So sexist language creates a wrong biological image of women. এটা গোটে কোন অসুবিধা করে যদি মু কহিলি যে সেক্সিজম আসুচি ল্যাঙ্গুয়েজ কু, হোয়াই শুড উই নট ইউজ সেক্সিস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, কোন অসুবিধা হচ্ছে যে আমি এমতি ভাষা ব্যবহার করিবা নাই, কাইকি না কেবল অসম্মানিত করিবা কথা নুহে, কেবল ছোট করে দেখাইবা কথা নুহে. সেক্সিস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ রে বি আহুরি গুড়াଏ পার্ট আছে, আহুরি গুড়াଏ দিগ ଅଛି. কোন দিগ ଅଛି না এটা গোটে এমিতিয়া কথা, এমিতিয়া গোটে এনভায়রনমেন্ট সৃষ্টি করে where it sends a message, a very wrong message about women, about their capabilities, about their image, about everything that they do. स्त्री लोक मानकर इमेज को खराब करे, स्त्री लोक मान संपर्क में गोटे खराब वातावरण तैयारी करे. एमितिया लैंग्वेज व्यवहार हवा द्वारा, सेक्सिस्ट लैंग्वेज व्यवहार हवा द्वारा गोटे मेसेज जाए जे ए लोक बा ए सोसाइटी स्त्री लोक को सम्मान दियंती नहीं. So women are being humiliated by sexist language. So it's very easy to understand if we can take some examples from our own amara cinema jodi ame kichi examples neba, if we will take some examples from our movies and very popular songs also from both our mother tongue and from the national language. ame jodi amara national language ba hindi cinema ro gito ba jo popular language am kavita am sahitya ए सब कथा आम चिंता करिबा ताले आम जानी परिबा आउ टिके भलरे बुझी परिबा जे सेक्सिस्ट लैंग्वेजटा कौन और सेटा कौन असुविधा करे. जेमिति कि गीत रे जेमिति गोटे बहुत पॉपुलर गीत आसला तो चीज बड़ी है मस्त मस्त. सो क्या कह जाऊँगी हु इज एड्रेस्ड आज तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, दैट मीन्स ए वोमेन इज ऑब्जेक्टिफाइड. गोटे स्त्री लोक को चीज बोली कह जाऊँगी, चीज रो अर्थ जिनिस गोटे आइटम बोली कह जाऊँगी. दिस इज सो मच सो एते बेसी अपमानजनक जे आमे आमर माँ को, आमे आमर भौणी को, आमे आमर झील मान को, आम सांग मान को जहाँ सांगरे आमे समाज रे बढ़ुचे, जहाँ सांगरे आमे भल संपर्क रे रहूचे, से मानू आमे कहूचे चीज बड़ी है मस्त मस्त. So this is something which is very much offensive, which is very much spreading a message that in this society people do not respect women. जोठी एई भलिया गीत जदि पॉपुलर हबो ताले व्हाट काइंड ऑफ मेसेज डज इट स्प्रेड. जदि एई भलिया गीत आम समाज रे पॉपुलर हबो, लोकप्रिय हबो, ताले आमे कौन मेसेज पठौछु. आमर गीत बहुत पॉपुलर जे जिसकी भी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, कमरे पे गद्दे पे बिछा लो गद्दे का
काम है, तो ये जो बिस्तर पे बिछा लो गद्दे का काम है। यही प्रकार जो गीतर एमती डुआल मीनिंग अच्छी, जो गीतर एमती स्त्री लोक मान केवल स्त्री लोक मान एमती कथा कह जाऊँगी। यही सब गीत जमती कि आमर भी ओडिया भी एमती किसी गीत अच्छी, मु ओडिया भी गीत भी कहबी जमती कि एमिति झील को मु बाहा हुअंती सकाळु संज बस उठ करती। व्हाई what is the language of this term, what is the language of this lyric? If you understand the language, the meaning of this lyric, एमिति झील को मु बाहा हुअंती सकाळु संज खाली बस उठ करती, this language particularly is not only sexist, it also asserts it also shows that a particular group of people are asserting, are exercising their power, that someone can make the other group of people ସେମାନେ ତାକୁ ବସ୍ ଉଟ୍ କରିପାରିବେ। this kind of they can control their lives, that means so this kind of cinema songs, this kind of lyrics which are very popular, आमे जाको एते लोकप्रिय कर देछे जे आमे सेई कथा पछरे कोन खराब भावना अछि बोली आडू केबे सहजरे भाबे नै। साबी साबी एसआई रु सेसआई को उड्डेई नेबी। why should this kind of vulgar songs be so popular? जेहेतु आम समाज आम परिवार आमे माने गीतर भाषा को जाउने, लिरिक रो ए जो गीत लेखा है तार भाषार उद्देश्य को बुझु ना, से ए गीत को आमे समस्ते गुणगुणाऊे, समस्ते गाउचे, बॉक्स ऑफिस हिट होची से भलिया सिनेमा, से भलिया गीत थिबा सिनेमा, एवं बाय ऑल दिस थिंग्स यार प्रभाव रे कौन होची ना वुमेन आर बीइंग ऑब्जेक्टिफाइड। स्त्री लोकन को आमे आइटम करके देखौचु, स्त्री लोकन को प्रति आमे खराब भाषा व्यवहार करूचु, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एट ए टाइम व्हाइल वी आर फाइटिंग फॉर जेंडर जस्टिस, इन ए टाइम व्हाइल वी claim that the society should have gender equality। आमे बहुत बड़ बड़ कथा कहूँ, लिंग समानता कथा कहूँ, लिंग विभेद को दूर करने कथा कहूँ, आमे किंतु एमिति गीत को प्राधान्य दौचु, एमिति गीत को भल पाऊँ, एमिति सिनेमा को आमे लोकप्रिय कर दौचु जोटी स्त्री लोकन को आइटम भाव में देखा जाउची। सो द यंग पीपल, आज यंग पीपल गर्ल्स एंड बॉयज, यू शुड नो दैट गर्ल्स एंड बॉयज बोथ ऑफ यू शुड reject these kind of movies, should reject these kind of songs। ए भलिया गीत को संपूर्ण भाव में आमे समस्ते मना करबा कथा। sexist jokes, if you will look at YouTube, if you will look at Google, there will be coming hundreds and thousands of sexist jokes। jokes रे एते sexism थाए एवं एते सब कथा रे स्त्री लोकन को कथा थाए, सब कथा रे जेमति थट्टा करा जाउची स्त्री लोकटा को। there are poets who are very popular, हास्य कवि, हास्य व्यंग कवि माने आपन जे हास्य व्यंग कविंकर कविता सम्मेलन केबे सुनिबे, आमे भी ता भीतर ताली मारी के हो होइके हसुचे, पिला माने तमने भी बहुत थोड़ा हसुथिबो। that produces a kind of laughter and a kind of light environment, but if you listen carefully the lyrics or the poems that they are reciting, it really मते प्रकृतर बहुत राग मारे, माने दैट ऑलवेज बिलिटिल्स वुमेन, एते बिलिटिल करे वुमेन को सबु बेले। जने जने कवि थांती सबु बेले घराली 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 मेरे घराली, ही इज ए वेरी फेमस पोएट नो डाउट, बहुत फेमस पोएट आम देश रे अछंती। हास्य व्यंग कवि माने मुख्यतः प्राय स्त्री लोक मान को बिलिटिल करी लाफ्टर क्रिएट करिया पे चेष्टा करछन। सो व्हाट डज इट से, ताहले एटा कौन कहूँ जे स्त्री लोक मैंने एमती हसर पात्र विद्रूपर पात्र, आम घर जो स्त्री अच्छी मुझे को बाहाई कि मोर जी भौणी अच्छी से समस्ते विद्रूपर पात्र। सो ताहले एमती जदि गोटे सोसाइटी भाव जे स्त्री लोक मैंने सब विद्रूपर पात्र, ताहले आमे केमिति क्लेम करिपरिबा जे आमे आधुनिक लोक, आमे जनमंगलकारी राष्ट्र रे रहउचे, आमे गणतांत्रिक लोक। हाउ कैन वी क्लेम दैट आमे ताहले ए सब किछि नुह, आइदर आमे ए सब किछि नुह बा आमे सेई कथा को केवल धरिकी बसिबा जे से सब कथा को आमे आइदर भल पाइबा बा आमे ए सब कथा पई जदि आमे हमर गणतांत्रिक अधिकार कथा भाबिबा, एथिक्स और वैल्यूज कथा भाबिबा, मोरालिटी रो कथा भाबिबा, ताले आमे ए सब को रिजेक्ट करिबा। सो यूज ऑफ सेक्सिस्ट लैंग्वेज इन आवर डेली कन्वर्सेशन, स्लैंग्स और नेम कॉलिंग कथा भाबा पिला माने, यू आर यंग पीपल एंड आई हैव हर्ड मेनी यंग पीपल नेम कॉलिंग और स्लैंग्स व्यवहार करचंदी बहुत यंग पिला माने आजिकली, एवं इवन इन आवर ओन मदर टंग, आम ओडिया भाषा रे मध्य, इन आवर ओन मदर टंग ऑल द स्लैंग्स आर ऑल द स्लैंग्स जेते जाक खराब कथा जिते जाक गाली अच्छी, ऑल दे आर यूजिंग डेरिगेटरी टर्म्स अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। माँ आउ भौणी विरुद्ध रे सबुजाक खराब भाषा सबुजाक गाली आमे व्यवहार करछे। व्हाई
हैव यू एवर जिते किए गोटे तुम सांग एमती भाषा कहूँ तुम पुओ मैंने झील मैंने जी भी शुणुच तुम के तार विरोध कर तुम के भाविच कि जे एमती कथाटा से ता निज माँ भौणी को कहूँ के भाविच कि आम एमती भाषा को सह्य करार अर्थ है जे आम आज ए सोसाइटी आम बहुत इम्यून हो जाऊँ आम स्त्री लोकंर अपमान प्रति आम बहुत खराब कथाटा को प्रश्रय दौचे सो ऑल द नेम कॉलिंग्स एंड स्लैंग्स दे आर यूजिंग डेरिगेटरी टर्म्स अगेंस्ट वुमेन गोटे दिल्ली हाईकोर्ट भर्डिक्ट देछि 2020 डिसेम्बर रे जे वेरी रिसेंट कथा बहुत निकटर कथा 2020 डिसेम्बर रे भर्डिक्ट आछि जे यूजिंग सेक्सिस्ट रिमार्क्स और लैंग्वेज अगेंस्ट वुमेन यूजिंग जदि किए सेक्सिस्ट रिमार्क यूज कला स्त्री लोक मान विरुद्ध रे ताहले दैट कैन अट्रैक्ट सेटा ताहले हेई परिबो क्रिमिनल ऑफेंस भाबरे ताकू ट्राई करि परिबो जुडिशियरी एवं इट्स आल्सो ए फैक्ट दैट कि जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एक्ट अगेंस्ट इन द वर्क प्लेस से जो एक्ट रे भी कहा जाउची जे सेक्सुअल सेक्सिस्ट रिमार्क्स देले जदि किए वर्क प्लेस जदि किए सेक्सिस्ट रिमार्क देबे ताहले सेटा भी निश्चित भाव में तार एगेंस्ट रे हमको आम जापर कोर्ट को एवं दैट इज एन ऑफेंस दैट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस सो 2020 डिसेम्बर दिल्ली हाईकोर्ट वर्डिक्ट भी से कथा कहूँ सेक्सिस्ट रिमार्क्स कैन अट्रैक्ट चार्ज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अंडर द इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता अधीन यहाँ सेक्सुअल हरासमेंट भाव में न्याय दि जापर सेक्सुअल हरासमेंट भाव कलना गणना कर सो let us think why should we use this kind of sexist language आमे कहीं एमती sexist language यूज करवा there can be also आमे बहुत गुड़ा शब्द अच्छी जहाँ कि आमे रिप्लेस भी करि परिबा जेमिति आमे मैनकाइंड कहूतली मु आमे ह्यूमन काइंड ह्यूमानिटीज कहि परिबा कॉमन मैन बहुत साधारण शब्द कॉमन मैन आमे सब कहू कॉमन मैन वी ऑलवेज यूज इट कॉमन मैन जगह आमे ऑर्डिनरी पीपल कहि परिबा चेयरमैन न कहि चेयर पर्सन कहि परिबा not necessarily that the chairperson is always a woman आमे जतले woman हो छतले काई chairperson कहबा we can replace that term from our vocabulary आमे पूरा पूरी भाव replace कर दे परिबा जे chairperson because a person is a neutral word a person does not always identify a woman आमे chairperson काहे की कहबा त जने स्त्री लोक खाली थिबो आमे chairperson पूरा पूरी भाव replace कर दे परिबा chairman को आमे layman को lay person कहि परिबा forefathers पितृपक्ष forefathers आमे पूर्वपुरुष कहि परिबा पूर्वपुरुष भी भूल पुरुष पितृपक्ष पुरुष these are all gendered words these are all are attached with some in some way or other the men जोटा पुरुष सहित अटैच शब्द सब एमितिया हेची भाषा सब एमितिया तैयारी हेची वर्ष वर्ष धरी आम व्यवहार रे आम ऐतिह्य रे आम संस्कृति रे पितृपक्ष ए कंप्लीट फोर्टनाइट इज गिवन टू पितृपक्ष बोली कहले आम जो श्राद्ध करुचे कौन खाली बापा मान को करुचे माँ मान को भी कराऊँगी किंतु आम पितृपक्ष कहवा दैट फोर्टनाइट इज नोन एज पितृपक्ष पितृतर्पण श्राद्ध बोली कहीपर श्राद्ध तर्पण बोली कहीपर ना पितृतर्पण आम कहवा सो दीज आर द टर्म्स आम जोड़ा कि माने आम भावुने आम एत सहज भाव व्यवहार कर चलचे जे आम भावुने जे या भितर गोटे जेंडर आस्पेक्ट अच्छी या भितर गोटे आस्पेक्ट अच्छी जहाँकि किसी लोक इनक्लूड करूना जहाँकि मार्जिनालाइज करुच्ची किसी लोक जहाँकि इनक्लूसिव नुहे ये शब्द गुड़ाक इनक्लूसिव नुहे आदौ ये शब्द आम जो कहवा जे मेन बोली से आम कहीदे आम से भावी दौचे मैंने मैंने जो वुमेन मैंने अच्छा बट द टर्म इज नॉट इनक्लूसिव एट ऑल यहाँ आदौ इनक्लूसिव नुहे बिल्कुल समस्त को अंतर्भुक्त करें अर्ली मेन जगह आम अर्ली पीपल कहीपर फोर फादर्स जगह आंसेस्टर्स कहीपर वेरी बहुत शब्द अच्छी एमती ना शब्द ना फायर मैन जगह फायर फाइटर्स कहीपर सेल्स मैन जगह सेल्स पर्सन कहीपर वी कैन रिप्लेस दिस टोटाली आमर भोकाबुलारी को आम पूरा पूरी भाव रिप्लेस करें आम आम भाषा को पूरा पूरी भाव बदल दे पारिबा देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी शुड कंप्लीटली ड्रॉप डाउन आमर जमती कि स्लैंग्स आउ डेरिगेटरी टर्म्स यूज कथा कहले आम ताको पूरा ड्रॉप करें जो शब्द को बदला जापर आम ताको बदल दे पारिबा जो कथा को बुझिकी टिके तार ताको टिके अमेंड कर दिया जापर आम ताको अमेंड कर दे पारिबा एवं जोठी आम सुनिबा सेमती गोटे इनसल्टिंग शब्दर भाषार व्यवहार होची आम से इनसल्टिंग बा अप्रेसिव टर्म्स भी व्यवहार होची एगेंस्ट ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल इन सोसाइटी आम ताकू भी
खराब बोली कही आम से आम स्वर जन पार सो तापर आम देखा व्हाट इज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज आम सेक्सिस्ट लैंग्वेज कथा कहले तापर जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज कौन देखा यूजिंग प्रॉपर लैंग्वेज इज ए मैटर ऑफ अवेयरनेस एक्चुअली हाउ मच वी आर अवेयर अबाउट आवर ओन एनवायरनमेंट हाउ मच वी think about ourselves, how much we think about the language that we are using, how much conscious we are about the words that we are using. आमे केते सचेतन है कि भाषा व्यवहार करुचे नहल तो समस्त भाषा एका होता समस्त बुझिबार जदि बुझिबार स्तर जदि एका होता इफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ ऑल द पीपल वुड हैव बीन सेम ताले ऑल ऑफ देम समस्त से एका भाषाटा कहते आमे कहीं ताले एका लैंग्वेज भितर मानकर ओडिया भाषा भितर भी आमे एते स्तर स्तर होकर कहीं शब्द सब व्यवहार करुचे आम कौन पाई जमती आम ओडिया कहूना खा भुंज गिड़ एमती तीन प्रकार शब्द अच्छे बोली आम कहूँ आम गिड़ बोली कहले समस्त को अपमानिया लगुच सेमती जो व्हेन वुमेन आर बीइंग बिलिटिल्ड व्हेन वुमेन आर बीइंग ऑफेंडेड थ्रू द यूज ऑफ सो मेनी वर्ड्स सो मच इन डिफरेंट कल्चर्स जो आम एत भाई भाव में स्त्री लोक अपमानित कला भाया कथा कहचे से वी शुड रेज अ वॉइस अगेंस्ट दैट सो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स वुमेन एंड men should develop the courage to समस्त गोटे साहस हवा कथा जे आमे यही भाषाटा कहवा ना जी कहूँ बंद करवा से मना करवा जे नाई आमर करेज ऑफ कंसाइंस डेवलप करवा दरकार टू रेजिस्ट सच यूज ऑफ वर्ड्स व्हेन दीज आर यूज्ड बाय आवर पेरेंट्स व्हाई करेज कहीं करेज दरकार कहीं कंसाइंस कहीं करेज ऑफ कंसाइंस दरकार बोली कहली कहीं विवेकर साहस दरकार विवेकानुमोदित साहस दरकार बिकॉज दिस लैंग्वेज और दिस वर्ड्स आर नॉट ओनली यूज्ड बाय यंग पीपल नॉट ओनली यूज्ड बाय योर फ्रेंड्स और माय फ्रेंड्स दिज आर समटाइम्स यूज्ड बाय वेरी डियर पीपल आम बापा माँ मैंने भी घरे एमती भाषा व्यवहार करते न जानी पारि व्यवहार करते पारती कहार मेंटल एटीट्यूड सेमती बोली से व्यवहार करते पारती क्लास रे टीचर सेमती व्यवहार करते पारती ऑफिस रे एडमिनिस्ट्रेटर सेमती व्यवहार करते पारती एंड व्हेन दिस पीपल आर यूजिंग दिस टर्म्स हाउएवर डियर दे मे बी इट टू योर हार्ट हैव द करेज ऑफ कंसाइंस टू रेजिस्ट आमे समस्ते से भाया करेज ऑफ कंसाइंस करवा कथा आनिबा कथा आम भितर जे आमे रेजिस्ट करवा वी नीड टू यूज लैंग्वेज दैट कन्वेज रेस्पेक्ट टू ईच अदर वी नीड टू क्रिएट ए सोसाइटी विथ म्यूचुअल रेस्पेक्ट आम यदि म्यूचुअल रेस्पेक्टर सहित गोटे सोसाइटी क्रिएट करने चाहूँ जो वुमेन एंड मेन जो गर्ल्स एंड बॉयज आर लिव with mutual respect and mutual understanding with each other then we should also use a certain language आमे भी सेमितिया गोटे लैंग्वेज व्यवहार करवा कथा जदि आमे चाहूचे जे आमे गोटे पारस्परिक सहावस्थान समाज चाहूँ जो स्त्री लोक और पुरुष लोक मान मध्य भल बुझामना रहिबो शांतिपूर्ण सहावस्थान हम समानता रहिबो ताले आमे भाषा भी सेमिति व्यवहार करवा आमे भाषा एमितिया कहवा नहीं बा सेमिति कहूथिबा लोकर भाषा को वी वोंट टॉलरेट वी वोंट एक्सेप्ट वी विल बी अगेंस्ट देम आम दलबद्ध भाव में हो झील मैंने तुम भी एकाठी ही कहीपर जदि किए सम सांग सेमती व्यवहार करता तुम मना कर मना न कल तुम बॉयकट कर तुम संगे सांग हवा ना बोली आम स्थिर करदे पार एंड आमे भी निजे आम भीतर जो टिके टिके कौटी रही जाइए अळंधु ताकू भी सफा करने को पड़ो आमे भी भाषार व्यवहार कला बेले बहुत सतर्क ही व्यवहार करवा एंड दिस विल क्रिएट ए मोर यहाँ गोटे बेसी भल इक्वाल सोसाइटी क्रिएट कर सो मेकिंग लैंग्वेज जेंडर फ्री और अवॉइडिंग यूज ऑफ सेक्सिस्ट टर्म आम ताको कहूचे वर्बल सैनिटेशन दिस मे बी ए कम्प्लीटली न्यू टर्म फॉर सम पीपल फॉर सम ऑफ यू एटा गोटे पूरा पूरी भाव नुआ टर्म हो पारे वर्बल सैनिटेशन माने कर व्हाट डू यू मीन बाय सैनिटेशन बाय मेकिंग द क्लीनलीनेस और बाय मेंटेनिंग क्लीनलीनेस ऑफ द एनवायरनमेंट दैट वी आर लिविंग सो इफ वी need to live in a clean environment if we are cleaning our houses, we are cleaning our offices, we are cleaning ourselves because we love to be cleaned, then we should also clean our vocabulary, we should also clean our tongues, we should also clean the language, the kind of vocabulary that we are using, that is known as verbal sanitation. We should use very clear words which are not at all sexist, जहाँ आदौ sexist नुहे, we should never ever disrespect a particular social group, we should never sound like assertive, we should never sound like using or exercising control over another social groups. So that kind of
courage, that kind of sensitization should come within us. आमे सेमिति सेटा को verbal sanitation बोली कहबा. Many words are there like man made, आमे ताको synthetic कहि परिबा, man power को आमे workforce कहि परिबा, mankind को humankind कहि परिबा. So आमे निजे भी ए सब जो साधारण शब्द सब आमे माने व्यवहार करूचे एवं गीत गाइला बेले जो माने सब एमती गीत गाउचंती जेमती कि मु कहली चीज बड़ी है मस्त मस्त चोली के पीछे क्या है किबा ओडिया रे भी बहुत गीत सेमिति अछि. मु गोटे लूनी आइसक्रीम गोटे गीत मु एबे सुनतली मु गोटे लूनी आइसक्रीम. तो एई भलिया जो सब खराब अर्थ द्विअर्थबोधक गीत आसुची जहाँ लैंग्वेज रे भाषा रे स्त्री लोकन प्रति अपमान करूचंती व्हिच इन द vocabulary in the language itself it is belittling women. तो सेटा भी गोटे प्रकार क्रिमिनल ऑफेंस बोली आमे कहि परिबा. ताकू भी आमे क्लियर करिया को पड़िबा पड़िबो ताकू भी आमे वर्बल सैनिटेशन बोली कहबा. सो एंड फाइनली आमे लिटरेचर मीडिया पॉपुलर कल्चर नीड टू बी स्क्रीन्ड. आमर जो जहाँ आगुरु अच्छी किंतु एबे जहाँ सब तैयारी होची नुआ पॉपुलर कल्चर आमर मीडिया आमर लिटरेचर से सब स्क्रीन्ड हवा दरकार भेरी प्रॉपरली स्क्रीन्ड हवा दरकार. एंड सब जगह सब स्कान्ड हवा कथा जो जे यूज करुची तांको द्वारा और जे क्रिएट करुचन तांको द्वारा बोथ शुड बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट दिस अबाउट द यूज ऑफ सेक्सिस्ट लैंग्वेज अबाउट नॉट यूजिंग सेक्सिस्ट लैंग्वेज अबाउट द वर्बल सैनिटेशन सो दैट दीज थिंग्स विल बी क्लियर. ए जिनस गुड़ाक केमती सैनिटाइज्ड हम जो कल्चर सैनिटाइज्ड हम आमर साहित्य सैनिटाइज्ड हम जो आम सब भाषा कहबा ना. गर्ल्स एंड वुमेन शुड रिजेक्ट वर्ड्स आर लैंग्वेज व्हिच ट्रूली साउंड डिसरेस्पेक्टफुल. गर्ल्स और वुमेन पूरापूरी भाव रिजेक्ट करने कथा जेकोसी संपर्क में आम थे आमको जी एमती खराब भाषा कहूब जी आम आगरे जी स्लैंग्स यूज करुवा खराब शब्द यूज करुव वी शुड रिजेक्ट देयर फ्रेंडशिप. आम से रिलेशनशिप को रिजेक्ट करने कथा. वी शुड क्लीयरली शो आवर आम आमर रिजेक्शन को वी शुड क्लीयरली शो इट टू देम. देन ओनली वी कैन हैव ए सोसाइटी with a gender neutral language. So if we have given some links to some beautiful movies in this part also. If you click and go to YouTube, you can see these things and you will have a better clear understanding about these things, about the sexist language, about gender language, about gender neutral language, about how we should use verbal sanitation, about how we should clear our own vocabulary. So if I will wind up, I would like to ask you, how would you feel if someone uses a kind of sexist language against you? When we hear it's being used against someone else, then we don't mind actually. आम यदि आउ क्या विरुद्ध में होमती भाषा आम ताले सुनुनु आम न शुणी पलि आसचु सेठू आम पलि आसचु वी जस्ट इग्नोर इट. कि जो आमको कहजिव आमको केमती लगे पुओ पिलाମାନେ ଯଦି तम भौनी को सेमती भाषा किए कहे जे तम घर स्त्री लोक मानक इफ पीपल विल यूज सच काइंड ऑफ लैंग्वेज अगेंस्ट योर गर्लफ्रेंड्स अगेंस्ट योर वाइफ्स अगेंस्ट योर मदर्स अगेंस्ट योर ओन सिस्टर्स हाउ विल यू फील. सो फ्रॉम टुडे onwards we should all take a vow, we should all promise, we should all ensure that languages should be clear and pure and gender neutral. आमे एमिति भाषा कहवा कथा जहाँकि आदौ बिल्कुल लिंगगत बायस आदौ जो नथिबो जहाँ लिंगगत दृष्टि आम देखिले संपूर्ण भाव निरपेक्ष होइतिबो एवं संपूर्ण भाव में क्लियर होइतिबो परिष्कार होइतिबो जो आदौ ये लिंगगत विभेद नथिबो किंबा गोटे अदर ग्रुप ऑफ पीपल को अपमानित करिवार उद्देश्य नथिबो. आमे एमिति भाषा कहवा नाही एमिति वर्ड्स व्यवहार करबा नाही जहाँ आउ काको हर्ट करिवो बा आउ को अपमानित करिवो. There are lots of legal instruments, but the legal instruments are the intervention by the state. सब बड़े state रो intervention बा legal instruments गुड़ा को use है परिवो जत्ते बड़े आमे निजे सतर्क हबा जत्ते बड़े आमे निजे सचेतन हबा जत्ते बड़े झिया और पुओ माने आमको सचेतन हबा दरकार आमे से legal instrument विषय जानिबा दरकार. Interventions are there, but it should be spreaded by us only. आमे किंतु ताको काम रे लगेबा दरकार केवल लॉ थिले हबनी आमे ताकू काम रे लगेबा एवं आमे आम निज जीवन रे आरंभ करिबा so that we can create in our own lifetime a gender neutral society so that we can at least we will use and our friends will use always the language that which doesn't have a sexist connotation जो थ्रे आदौ sexist connotation रहबनी. So to use the language we have to be very
careful, very conscious. Next time someone uses a sexist language, raise your voice. Say him that, no, this is not done. Thank you. Thank you very much.